बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कुरान पाक में अल्लाह जल्ल जलालुहू फरमाते हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, कि बेशक अल्लाह के नज़दीक दीन इस्लाम ही है। दूसरी जगह पर अल्लाह जल्ल जलालुहू फरमाते हैं एक आयत में, जिसका तर्जुमा है कि जो शख्स इस हाल में मरा कि उसका दीन इस्लाम नहीं था और वो आखिरत में हमारे पास आ गया, तो हरगिज़ उससे वो बातिल दीन कबूल नहीं किया जाएगा। यानी अल्लाह के नज़दीक सिर्फ़ दीन इस्लाम ही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक शख्स है, सो कॉल्ड मुस्लिम, जो कहता है कि मेरा नाम जावेद था और मैं अब हिंदू, यानी मैं हिंदू हो गया हूँ। और वो ये बात असल में एक aniruddhacharya, एक बड़ा पंडित है, तो उसके मजलिस में वो ये बात कर रहा है कुल्लम कुल्ला। और वो कह रहा है कि मैंने इस्लाम को छोड़ दिया और सच्चे मज़हब को, नऊज़ु बिल्लाह, यानी हिंदू मज़हब को मैंने कबूल कर लिया है। तो आगे जाके उसके तासुरात क्या हैं, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा अगले सेक्शन में, अगले पार्ट में, कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक जो है इस टॉपिक पर क्या बहस करता है कि जो शख्स इस्लाम को छोड़ के मुर्तद हो जाए, किसी और बातिल दीन को कबूल कर ले और उसी दिन के साथ वो मर गया, तो क़यामत के दिन उसका क्या हशर होगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने इसके बारे में क्या वईद फरमाई है। तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी, मैं सबसे पहले तो आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करना चाहूँगा मैं, और मैं क्षमा चाहूँगा क्योंकि मुझे है ना, मैंने बहुत आपकी कथाओं को सुनता हूँ और मुझे बहुत प्रेरणा भी मिलती है आपकी कथाओं को सुनकर, और मुझे थोड़ी घबराहट हो रही थी, तो इसलिए मैं बैठा हूँ आपके सामने, तो इसलिए मैं क्षमा चाहूँगा। और मैं एक मुस्लिम धर्म से हूँ और मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं सनातन में आ तो गया हूँ, पर मैं ये पूछना चाहता हूँ। आप मुस्लिम हैं? नाज़रीन देखिए कैसे कैसे लोग हैं पहले जावेद नाम था, कि जो हक को छोड़ के बातिल पर आ जाते हैं। तो आपने हिंदू धर्म अपना लिया? हाँ, अल्लाह जल्ल जलालुहू ही जानते हैं। सबसे पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे कहते हैं कि तुम हिंदू बने हो। हिंदू तो मुझे नहीं लगता कि कोई किसी को बना सकता है, क्योंकि हिंदू पैदा ही होता है, मेरा मानना ऐसा है। और ये मुझे ना किसी ने ब्रेन वॉश करा और ना किसी ने कुछ कहा, ये एक ठाकुर जी की कृपा हुई, तब मैं सनातन में आया। वैसे किसी ने मुझे, या मैंने किसी को देख के सीखा, या ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा, और मेरे जो फैमिली वाले हैं वो भी आपके फैमिली वाले आपका विरोध नहीं करते कि तुम कहाँ चलो? मैं अभी इतना डिप्रेशन में, कैसे लोग हैं, फोन आ रहे हैं, फैमिली वालों के ज़्यादा आ रहे हैं, जो हक को छोड़ के बातिल कुछ की भी तरफ नहीं कह चले रहा, जाते हैं। पर फैमिली वाले का आज भी मम्मी का फ़ोन आया और वो कहने लगी हमसे कोई मतलब नहीं, हम मर भी गए तो हमारा मुँह मत देखियो, तो हमारी वजह से पूरे रिश्तेदार, तेरी वजह से हमें पूरी वो कर रहे हैं, और मतलब हमसे रिश्तेदारी टूट गई है, हमारी एक लड़की है उसकी शादी करनी है, तेरी वजह से उस लड़की की भी ज़िंदगी ख़राब हुई है। तो महाराज जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठाकुर जी से मेरी एक शिकायत है हमेशा कि या तो मुझे पहले इधर का कर देते या उधर का कर देते, ये बीच में ला के मुझे इतना परेशानियों में डालना, और उनको मैं छोड़ नहीं सकता। I have a question that has been in my mind for quite a while now. The Noble Quran says, let there be no compulsion in religion. That's point number one. And point number two is that the punishment for a Muslim who wants to come out of Islam, God forbid, is death punishment. According to me, this signifies a virtual compulsion in the mind that this is the punishment which will be given to me, so hence I cannot do it. And this kind of, I just need some clarification. I'm sure there is a clarification on this point. That's a very good question. He hasn't given the reference first. He quoted the verse of the Quran from Surah Baqarah, chapter number 2, verse number 256, which says, La ikraha fi deen, there is no compulsion in religion. And that is part of the deen, that you cannot force anyone, you cannot compel anyone with the point of the sword. काफी knowledgeable बंदा है डॉक्टर ज़ाकिर नाइक। His next question is that if any Muslim leaves his religion and becomes a non-Muslim, becomes an apostate, then the penalty is death. So isn't this a sort of compulsion? Before I give the answer, I would like to mention that every country has its own law, its rules and regulations. And most of the countries, one of the highest punishments is for treason. For example, if a person is working in the army, and if he leaks the important thing of the country, all the vital points and the information to the enemy, it is called as treason. Most of the countries, if anyone does treason, sells the important blueprints and documents of the country to the enemy, many of the countries, the death penalty, many of the countries have life imprisonment. So now if I tell that what kind of a country is this,
in where I'm compelled by the country not to do certain things. What is wrong is wrong. So here also, if a Muslim becomes a non-Muslim, Subhanallah. it's only in the Islamic state of law if that Muslim who becomes a murtad and then propagates his new faith and deceives the people, that's the time this penalty is put. For example, if in a school, if I appoint a teacher, mathematics teacher, Allah she is teaching 2 plus 2 is equal to 4, then tomorrow she teaches 2 plus 2 is equal to 5. So, but naturally I won't keep her in my school. यानी कितना The ज़बरदस्त दीन same अल्लाह ने way, हमें दिया the है, इस पर punishment हम अल्लाह का for शुक्र such a करें। murtad in Islamic state, it is death. This will not be called as compulsion. It will be a person who has strayed away from the truth to the falsehood. But as far as making anyone accept Islam, no Muslim can force any non-Muslim to accept Islam at the point of the sword or at the point of the gun. What we have to do is we have to convey the message. If you like it, you accept it. If you don't like it, no problem. Our job is to convey the message. It's mentioned in the Quran, Surah Ghashiyah, chapter number 88. فَذَكِّرْ نَمَّا أَنْتَ مُذَكِّرْ. Our job is to deliver the message. We have to deliver the message in the best way, with hikmah and with husna, with most beautiful preaching. Whether the other human being, non-Muslim, Subhanallah. accept or not, it is not under our control. We cannot force anyone to accept Islam at the point of the sword, the point of the gun. But that what you're talking is a different case in a state of Islamic law. Like as I gave an example where a person working in an army, if he sells the secrets of the country, then the penalty is somewhat similar. Hope that answers the question, brother. Right, okay, yeah.